when I was preparing for IIT. Students are so lazy in nature. As this pandemic hit, हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और ये है फाउंड द फाउंडर सीरीज का एपिसोड नंबर 2, जहां पे आज हमारे साथ है एक और खास मेहमान। जानेंगे उनसे उनके स्टार्टअप के बारे में, उनके बारे में और बहुत सारी बातें हम करेंगे उनके साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप हैं पुष्कर सिंह, ओवर टू यू। thank you, Parun. Thank you so much. It's my honor, or I'm very pleased to be here, to be part of your episodes. So now I'll discuss my journey, what till date what I have done, और भी सारे बातें करेंगे अपन। या सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को अपने स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा बताएं, लाइक अबाउट प्रिप एंड लर्न के बारे में। Sure. Actually, there is a startup which name Prepnlearn Education Private Limited, and I founded this startup with two team members, or two co-founders. And now I'm currently acting as the CEO of that startups and as a founding members. Basically, Prepnlearn deals with coaching institutes and the schools. Okay, this is the market of B2B. Okay. What we are doing in a Prepnlearn, we provide the infrastructure, simply say IT solution. We provide IT come academic solution to the coaching institutes and schools, or those who individual content creator, I mean the educational content creators. We encourage them to increase their revenue, increase their business, and they should also done good profit in their upcoming sessions. So basically, we are here to encourage the market of coaching industry and schools. Most of the companies till dates they are targeting the students, and they are doing for the students for their upliftment of their quality of education, their skills. They actually want to develop the skills in the students. Whatever they done till now, they are doing for the student, majority of the company. So we and our team member just thought that why we should not do anything for the coachings, those teachers, those content creators who deliver good content to those students who preparing for a particular exam. So the ideas begins from here, and actually I'm just living in a tier 3 city of Aurangabad, Bihar, as you know, province. So as we saw in our surrounding that the majority of the input source of students are their local coaching centers. So if we uplift that coaching centers somehow, if we make a good quality of infrastructure in that coaching centers, and push them in a digital era, so somehow there will be a good for the students and as well as for the teachers. Correct. So the idea is so simple. So we are here to uplift the coaching center and make them those directors or teachers. They are just working in this sector from many years, and उनकी revenues काफी अच्छी हो जाए. We are just hoping to increase their revenue, increase their sales, increase the engagements and reachments at their doorstep in the sessions, in the upcoming sessions. Those who are currently connected with Prep and Learn are in a good situation, sir. So आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि बहुत सा सिंपल सा आइडिया है, बट उस पे आप लोग वर्क कर रहे हैं. सो बहुत सारी चीजें देखने में आसान होती हैं, लेकिन जब उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दोज आइडियाज, सो दैट्स वी फाउंड सो डिफिकल्ट. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट्स ओनली लाइक कि कैसे आपने उस प्रॉब्लम तो सबके सामने है, वो सब चीज को दिख रहा है कि लाइक कि सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सारे एजुकेशनल सेक्टर जो है वो अब एडटेक आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं. आपने उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई, लाइक एड्रेस क्यों किया, कैसे वो आया कि चलो इसको करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? लाइक कि जो इंडिविजुअल कोचिंग सेंटर्स हैं, जो कि स्कूल्स हैं, जिनके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आईटी का, उनको आप प्रोवाइड करा रहे हैं. तो कैसे आप लोगों ने ये प्लान करा, कैसे ये एड्रेस करने का सोचा?
एक्चुअली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, तो मैं उस समय 9th 10th में था, यही औरंगाबाद में। होता क्या है कि दो जो स्टूडेंट्स हुआ eagerly facing any problems, or those who are dedicated for their preparation, हम्म, somehow he or she can find the solution of any of the problem। ठीक है, हम्म, जो भी उसके साथ तो प्रॉब्लम्स है, वो कहीं ना कहीं से उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली ले आते। दो सॉल्यूशंस आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट्स और इन अ बुक स्टॉल्स, और टू समबडी एनी पर्सन, जिससे उसके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। बट एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आर लेजी, सो लेजी इन नेचर। ठीक है, उन्हें बनी बनाई चीज मिलनी चाहिए कि भाई हम इस पॉइंट पे जाते हैं, इस कोऑर्डिनेट्स पे, और हमें ये चीज मिल मिल जाती है, जाए तो काफी अच्छा है। आसान हो जाए। हाँ, क्योंकि हाँ, बात अगर हम एक छोटी सी प्रॉब्लम की करें, तो प्रॉब्लम कोई भी चीज न तो आज किसी चीज की कमी है, ना पिछले 10 साल में थी। 10 साल में भी कॉन्सेप्ट थे, स्टडी मटेरियल्स थे, जो चीज आपको चाहिए वो मिल जाती थी, बट वो है कि दे आर इन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर। करेक्ट। ठीक है, they are not in a organized manner, or you can say not in a shape of a good structure, कि हमने किसी एक पॉइंट को पिक कर लिया और वहां से अपने जर्नी को स्टार्ट कर लिया। तो हमने काफी अर्ली एज में, एट व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन क्लास 9th स्टैंडर्ड्स, एंड one of my team members, Sonu Singh, actually we discussed we should do something for this sector. So at that moment we don't have a sufficient amount of funds, and we don't have a so good infrastructure. So uh, at that time of moments we are just uh, drop this as an idea. But later on, when I study, when I go to Kota, and I studied there, and I just saw the management, and how how the coaching institutes of Kota and the other HubSpot of India, I mean the coaching HubSpot of India, they are managing a good infrastructure for the student as well as themselves. तो वहां पे हमने देखा कि नहीं, चीजें काफी सही है। अगर if we apply the same things in an online manner, and do same scenario for the other coaching institutes, somehow maybe the amount of percentage may be small, but there will be I mean definitely there will be some benefits for those coaching institutes. तो वहां से फिर हमने ये स्टार्ट किया कि चलो ठीक है, इसको दोबारा से करते हैं। फिर हमने ये देखा कि भाई एट दैट टाइम बहुत सारे कंपनीज या स्टार्टअप्स बोल सकते हो आप, वो लॉन्च हो चुके थे, एंड एक अच्छे टाइम इंटरवल को उन्होंने क्रॉस कर लिया था, और नाउ दे आर कॉल्ड एज अ जायंट प्लेयर ऑफ दिस मार्केट। ठीक है, राइट। तो हमने सोचा कि भाई हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, मार्केट में पहले ही आ चुके हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। हमारे पास उतने फंड्स भी नहीं, एंड वी आर नॉट सो इन अ स्ट्रक्चर मैनर, आई मीन हमारे पास उतनी बड़ी टीम नहीं है, कोई उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एंड द प्रॉब्लम्स एक्चुअली वी एंड आवर टीम मेंबर्स, जो हमने पकड़ा था कि नहीं भाई ये प्रॉब्लम मार्केट का, somebody actually came in the market and solved that problem, and now they are earning a good profits. तो हमारा प्रॉब्लम फिर यहाँ पे भी आ गया कि भाई हमने जो सोचा था वो तो प्रॉब्लम में आ गया, किसी ने अच्छा कर दिया है, और यू आर नॉट इन ए कंडीशन टू डिफीट दैट स्टार्टअप, और somebody to compete दैट स्टार्टअप। आप उस कंडीशन में है नहीं। तो हमारे लिए फिर से वी आर एट आवर बिगिनिंग स्टेज, वी आर एट आवर रेफरेंस लाइंस की वी हैव टू डू समथिंग, करना क्या है। उसके बाद हमने देखा कि भाई हम जिस कोचिंग सेंटर्स को प्रिफर करते थे, और जो हमारे लोकेलिटी में बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर्स को प्रिफर करते थे, उनका क्या कंडीशंस है। एज यू नो प्रोविंस इंडिया इज अ मिडिल क्लास फैमिली कंट्री। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज आर बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। करेक्ट। तो हमने सोचा कि भाई दुनिया के सारे, मतलब इंडिया के सारे बच्चे तो हॉटस्पॉट पे पहुंचेंगे नहीं। द अमाउंट्स आर सो स्मॉल इन परसेंटेज, यू कैन से 1% will be more, I mean say it's a bigger for if you comparing to the total number of students preparing for a particular exam in India, and
the ratio of that students to those who are just preparing their exams in a hotspot of India, I mean the coaching hotspot of India, Delhi, Visakhapatnam, Kota, तो काफी नंबर्स कम है। तो हमने वो सोचा कि भाई ये इनपुट सोर्स ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के, and we just found that the local coaching centers are the main input source of those students. मिडिल क्लास फैमिली के साथ कंडीशन से ये कि फैमिली not able to afford that much amount of cost for the preparation of their son and daughters, I mean their तो उन पेरेंट्स के साथ है कि भाई कोई चाहता तो नहीं है बट चलो ठीक है इन्हें लोकल कोचिंग सेंटर्स में भेज देते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। So from this idea, actually we picked this idea. We have to do something for the local coaching centers, definitely for the tier 3, tier 2 and tier 1 cities. ठीक है, because in metro cities things are so advanced, so we don't want to go in metro cities, and so we just implement our idea in tier 3. एडवांस किया जाए, कोचिंग्स को हमने आईटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए और एज वेल एज एकेडमिक सॉल्यूशन इन दिस मैनर्स की इफ अ सिंगल और 2 or 3 टीचर्स जस्ट दे आर रनिंग पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स and they are indulged in most of their times are indulging in the delivering the contents, I mean the lectures, for completing their syllabus for in a particular interval of times, or you can say the deadline. But the rest of the things those students who are facing the doubt problem, some students are lagging because of not a good counseling for them, not a good mentorship for them, because teachers के पास भी problems है, they don't have so much times to share the सोचा कि इस प्रॉब्लम को भी खत्म किया जाए। We provide a doubt killer in centers, we assign a mentor for some range of students. If you have a problems in any time, actually if you have a problem at 12 AM at just a midnight, you can call the mentors and just share your problem, whatever it is, it doesn't matter, it's your delay in preparations, somehow problems in your psychological problem that you are not fighting with the hurdles, actually those who are coming in your preparation journey. तो हमने इस चीज को पूरा कंबाइन किया और एक इंस्टीट्यूट्स को ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों हमने एक हाइब्रिड मॉडल प्रोवाइड करके दिया। हमने इसे HLMS बोलते हैं, हाइब्रिड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, हम एक इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड करके देते हैं। ओके और काफी इफेक्टिव कॉस्ट में। Yeah, so thank you. Like कि behind the starting this series, found the founder, मेरा पर्सनल इंटेंशन ये है, थोड़ा सा सेल्फिशनेस ये है कि मैं समझना चाहता हूँ लाइक कि कैसे, लाइक कि जैसा कि मैंने जो अभी आपके इस क्वेश्चन से आपसे ऑब्जर्व करा कि लाइक कि बहुत सारी बड़ी जो कि जाइंट कंपनीज जिनको हम बोलते हैं, सो कहीं ना कहीं एक उनके साथ एक उनका एडवांटेज है, उनका डिसएडवांटेज भी है। लाइक कि जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनका एक्सपेंस भी बढ़ जाता है, राइट। लाइक एडवर्टीजमेंट में वो बहुत कॉस्ट उनको बियर करना होता है, उनका जो मशीनरी पूरा वर्किंग सिस्टम जो है, जितने एम्प्लॉयज हैं बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनका एक्सपेंस बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं अगर एडटेक की हम बात करें तो फिर एट द एंड ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑफ द कंटेंट, लाइक फॉर अ स्टूडेंट अफोर्डेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोर्स का प्राइस बहुत लाइक कि 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख इस तरह के कोर्स का प्राइसेस हो जाता है। सो उस चीज को आपने ऑब्जर्व करा है कि मिडिल क्लास फैमिली का जो स्टूडेंट है, जो कि वो उतना कॉस्ट बियर नहीं कर सकते हैं, सो उनको टारगेट कर सकते हैं, जो कि हॉटस्पॉट तक, जो कि आपने उसको नाम दिया कि वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी। सो उसको आपने ऑब्जर्व करा, सो दैट्स लाइक वेरी इनोवेटिव एंड लाइक बहुत अच्छा आपने उस चीज को पकड़ा कि कैसे हम लोग उस चीज को एड्रेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो लाइक कि आपने बात करी फंडिंग की, लाइक कि बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनके पास लॉट्स ऑफ फंडिंग है, राइट। सो competing with them on pricing, that's not like sufficient for us, like that's not feasible for like a small startup.
तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, लाइक कि क्या स्टेटस है अभी आप, लाइक कि कितने कोचिंग के साथ, कितने इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे हैं, कोई फंडिंग का प्लान कर रहे हैं, कुछ फंड रेज करने का प्लान कर रहे हैं, कुछ क्या स्टेटस है? साथ ही साथ लाइक कि नियर बाय फ्यूचर प्लान क्या है प्रिपेयर लर्न को लेकर? I'm taking your questions one by one. So, till date, we are working with 7 clients, and so we are now in a good position. So, the numbers are not so very large, but you can imagine we reached the 5K plus the students, the paid students. From those students, we are just earning money. And so our focus is in this financial year, we are just hoping to cover more than 20 plus clients. Actually, we want to onboard 20 plus clients in this financial year, 20,000, 23, 22, 23 financial year. And regarding fundings, we are also in talk with some of the investors, some of venture capitalists, and some of the for some of those small firms, you can say. And maybe we are just hoping that in next 2 or 3 months we will raise some a good amount. I mean, as per my opinions, we are gonna raise you can say 0.5 to $1 million. Okay. We are in a talk with a good investors, some are from the domestic, from India, and some are from the foreign. So let's hope कि कुछ आ जाए, upliftment हो जाएगा प्रिपेयर का. Correct. Yeah, so that's all about funding. And like कि जैसा कि हमने देखा, लाइक कोविड पैंडेमिक के दौरान, व्हाइल द पैंडेमिक, एटिक का क्रेज जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है. लाइक कंप्लीटली जे कर्व जो हम लोग डिफाइन करते हैं ना, जे कर्व कंप्लीटली एटिक में है. सो क्या आप इस पे लाइक कि नियरली आप क्या देखते हैं, लाइक कि ये एक महज एक जे कर्व था, एक समय था जो बीत गया, या इसी तरह से वो चेंज होता रहेगा, लाइक कि जे कर्व के साथ ही बढ़ता रहेगा, या फिर एक बार बढ़ा और ये अब स्टेबल रहेगा? कैसे आप देखते हैं इस चीज को, क्रेज फॉर द एटिक? Actually, you just picked the good question for me. Jacob, you just heard about the activation energy for any chemical reaction. Okay? If you provide that activation energy in the process, the chemical reaction actually starting with the reactants, and we will get a product. Just because of a particular amount of activation energy you just give to that reaction. This is the same patterns actually just followed by this edtech industry. Every industry has a saturation point. Saturation points, it means that कि ऐसा नहीं कि इस मार्केट में कुछ नया नहीं हो सकता, but the speed will be fall so drastically as its curve change drastically from 0 to a particular good numbers in a small interval of times. The same thing will follow in the next upcoming years. As you said, as this pandemic hit in India, or you can say the whole world, students के पास एक option नहीं था. Actually, it's become necessity for students to go online. Correct. ठीक है. Actually, what I said earlier, students are so lazy in nature. उनके हाथ में होना चाहिए. ठीक है ना. If you put a good books in their hands, the students will hope just someone should be here to read this book, and someone should be here to understand me the particular concept that are written in a book. तो ये situations है. ये एक necessity बना, और majority of the institutes जो है actually they shift their gear to the online sector. I mean, so online they want to build a infrastructure, not say a good infrastructure, but a infrastructure for IT for a student. कि हम अगर वो नहीं कर पाते तो वो पीछे हो जाते. ठीक है ना. They will be just like lagging from the market or lagging from the sector. ठीक है.
those institutes are running in offline manner. तो ये एक necessity बना, और necessity एक वो I thought there is a quote, necessity is the father of invention. ठीक है, तो it's not an invention but just like innovation कि लोगों ने इसे accept किया. Most of the parents, most of the students in a harsh manner or in a good manner, they accepted the reality that I have to prepare or I have to study from this platform in a online platform, क्योंकि schools भी वही कर रहे हैं और बाकी भी वही कर रहे हैं. You are talking about the J curve. You actually you are a good observer, as I think you are just observing the market. Those startups or a company till date, those who are dominating this edtech markets now, they have a good competition. I mean, the others company now in a good position to compete the number one or number two players in this market. Tata, Reliance, An Academy, Byju's, these are the giant player of this market. And the revenue model for all these company are same. They are just targeting the students is their proper revenue models. And somehow we just observe their revenue model, and we just find the loopholes that they are doing for a students in a direct manner. From point A, just they wanna go to point B. Point B is a location or a coordinate. So there is some gathering of students, and they wanna target those students. But we just shifted our path and made it curves. We just want to go to the coaching institutes, and in coaching students there will be a good number of students. They are studying there, and we want to pick those students from a coaching institutes, and so we take coaching institutes as a middleware. Correct. So let me inform my audience. Yeah, so let me inform my audience. मैंने Prepnlearn का YouTube चैनल एक्सप्लोर करा है. वहां पे कुछ मुझे ऑडियो बुक्स मिले जो कि मैंने बहुत मेरे लिए हेल्पफुल थे, लाइक रिच डैड एंड पुअर डैड एंड लाइक दैट. कुछ पॉडकास्ट ऑडियो बुक मुझे वहां मिले. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द ऑडियंस, आप कुछ और भी बुक समरी वहां पे डालें ताकि हम फ्री में उसको ग्रैब कर सकें, बिकॉज बहुत सारा टाइम नहीं होता है सभी लोगों के पास. लाइक कि प्रॉपर बुक रीड करना थोड़ा कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी होता है. तो आप उस चीज को और भी कुछ और भी ऑडियो फॉर्मेट में डालें, बुक्स के रिव्यू और नॉट रिव्यू बट बुक समरी ऑफ द डिफरेंट बुक्स. सो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द ऑडियंस. एंड साथ ही साथ मैंने एक ऑब्जर्व करा कि जितने भी इस मार्केट में जितने भी लोग हैं, प्लेयर हैं, लाइक कि एडटेक, अमेजोन भी इसमें आने का ट्राई कर चुकी है, लेकिन उतना उसका भी डोमिनेंस नहीं है. अमेजोन कि वो सब चीज में, कि म्यूजिक इंडस्ट्रीज में, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, ई कॉमर्स सभी में है, उस हेल्थ सेक्टर. सो उन्होंने इसमें भी ट्राई करा, लेकिन अभी उन्होंने सक्सीड नहीं करा है. उतना उनका डोमिनेंस नहीं है, लेकिन लेट्स होप फ्यूचर में क्या होता है उनके साथ. सो बढ़ते हैं आगे, और हम लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है बिकॉज जूम का हम लोग के पास ट्रायल है जो कि 45 मिनट अलाउड करती है. So let me answer your last question. I will just take 2 minutes. Actually, as you told, Amazon is not doing good in this market. Recently, one of from Amazon, I will not disclose his name. So he is a strategic head of Amazon India. Okay. Actually, we onboard him to the Prepnlearn, and Amazon is working so good. Actually, they are working in the backgrounds, but in the upcoming 1 or 2 years, Amazon will defeat some of the giant player of this market. It's my prediction. So Amazon works well in every sector, whether it's music, it's e-commerce, consumer based things. Now it's a time for him, the learning education industry, edtech industry.
So it's like जैसे कि रिलायंस आए थे ना, लाइक कि वो 5 years समथिंग वो प्रिपेयर कर रहे थे, फाइबर केबल बिछा रहे थे, और सडनली आया उन्होंने और ऑफर करा कि फ्री इंटरनेट, फ्री मोबाइल, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और फिर पूरा मार्केट को कैप्चर कर लिया. सो आई थिंक Amazon इज प्लानिंग लाइक दैट. या maybe yeah, so let's hope for better. एंड मूविंग फॉरवर्ड, लाइक कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, लाइक कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, लाइक कि एक स्टार्टअप स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं ना कहीं बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा आसान है, लेकिन उसको सस्टेन करना, स्टार्टअप को ग्रो करना, उसको सस्टेन करके रखना, और एक आउट ऑफ द बॉक्स, एक बना हुआ पाथ को फॉलो ना करके एक हट के रास्ते को, अलग रास्ते को फॉलो करना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होता है. सोसाइटियल प्रॉब्लम होता है, लाइक कि लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे कि ये क्या कर रहा है, जॉब कर लो आराम से, इतना सैलरी 30,000 50,000 का सैलरी, तुम जॉब क्रैक कर सकते हो. सो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आने वाले यूथ जनरेशन को और हमारे ऑडियंस को? Actually, there is a two aspects of this question. So one is the motivation, and the from my side, other is the criticism. स्टार्टअप्स और फाउंडर्स को फाउंडर्स सीईओ का एक नेम लगाना अपने नाम के आगे, आप ये एक ऐसा चीज है ना कि आप एक अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का एक अच्छा खासा समय जो है आप इसमें लगाने जा रहे हैं. इट्स टोटली सो रिस्की. अगर आपका आइडिया वर्थ नहीं है, आप सराउंडिंग्स और नेचर्स और इन्वायरमेंट से आप सीख के, आप मार्केट के बारे में नहीं जान रहे हैं, आपके पास एक वेल अच्छी टीम नहीं है, आप स्टार्टिंग्स में अकेले हो, बट कुछ पार्टिकुलर टाइम्स के बाद वो आपके पास होने चाहिए, आप अकेला कुछ नहीं कर सकते. तो मेरे लिए ये चीज है कि अगर आपके पास वो सारी चीजें नहीं है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, आप छोड़ दीजिए. यू आर नॉट बिल्ड फॉर स्टार्टअप. ठीक है. फ्रॉम माय साइड it's a harsh word for those viewers, but it's a reality. And so अगर आपने, if you find any loopholes to the existing company or existing startups, or you have a good, if you have a new idea and for the society, for the welfare of our country and or a particular environment, तो आप definitely कीजिए. लोग आपसे जुड़ते जाएंगे. You will not think which one came from which channel, from which gates. If you have a good idea and the strength of your startup, I mean the foundation of your startup is good, you understand the market of your product, you understand the competitors, you understand the revenue model of your startups and the other competitors, तो डेफिनेटली आप सक्सीड कीजिएगा. टाइम्स लगेगा, इट्स अबाउट 2 years 4 years 5 years, बट इफ यू हैव गट्स फीलिंग्स कि आई एम डूइंग गुड एंड in every parameters you are eligible, that you can launch this product or launch your idea or launch your platform, तो आप कीजिए. लोग सपोर्ट करेंगे. Actually I will conclude in single lines, that's if you have a guts feelings, if you understand the market, if you understand the product, just proceed in your journey, I mean your startup journey. And if you are just taking it as casual, that startups are just like the fashions for just like a trend, ठीक है, don't take it as a trend, क्योंकि वो आपके लिए बहुत will waste your 2 or 3 or 4 years of your life, and that will never come again in your life. Correct. Yeah, that's like a very big important statement आपने बोला, like कि आप स्टार्टअप करें क्योंकि आपको स्टार्टअप करना है, इसके लिए नहीं. आप रियल में कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, या फिर किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, या फिर एग्जिस्टेंस प्रोडक्ट में, एग्जिस्टेंस कोई कंपनी के वर्किंग मॉडल में कोई लूप होल है, देन आप कुछ उसको एड्रेस कर रहे हैं, देन इट्स वर्थ इट. अदरवाइज आप अपना टाइम, मनी, रिसोर्स सब कुछ वेस्ट करेंगे, है ना, एंड जो कि बहुत पेनफुल होता है. बाद में आप मतलब रिग्रेट करेंगे कि आई शुड नॉट डू दिस. So yeah, that's all. Thank you for joining me. And also, like I'm going to put Prepnlearn website link, as well as app link, as well as YouTube channel. That's I told, like there are lots of podcasts like streamed
audiobook summary. So I will put all those things, links in our video description. So our audience can grab the benefit of those content. As well as मैंने आपके चैनल पे देखा है, सभी के लिए वो तो रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फिलहाल, नीट का हो गया या फिर आईआईटी, अब बहुत जो भी एग्जाम्स के लिए आप कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, सो उनके लिए डेफिनेटली वो डेमो टाइप का या फिर कुछ तो बेनिफिशियल वो सारे कंटेंट होंगे. सो मैं वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा. And that's all from my side. I would like to request to you, like, give a message to our viewer. Kindly subscribe this channel, like that we can get motivated to make content like this. So to you, sir. Actually, thank you, Prun. Thank you. Actually, it's my pleasure to be part of this episode. And I will request to all those viewers and please go through these channels, hit them, subscribe, but comments there, and share your views. So Parveen is doing good for the entrepreneurs. So keep him motivating. Definitely. Once again, I will request to all those viewers, subscribe his channels. Your one subscription will motivate Parveen, and that will be good for us. So like it, subscribe it, and just share your views in a comment. Thank you, Pushkar, for joining us. So take care. Bye bye. Bye. Thank you so much.